Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivara Dhariya Gopi Janavallabha Girivara Dhariya Giri Yasodhanandana Brajadhanahanjanaya Yasodhanandana Brajadhanahanjanaya Jamunatirahavane Chahayam Jamunatirahavane Chahayamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Jaya Gopi Janavallabha Girivara Dhariya Jaya Gopi Janavallabha Girivara Dhariya Giri Jasodhanandana Brajadhanahanjana Jasodhanandana Brajadhanahanjana Jasodhanandana Brajadhanahanjana Jamunatirahavane Chahayam Jamunatirahavane Chahayam Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavallabha Girivara Dhariya Jaya Gopi Janavallabha Girivara Dhariya Hey Yasodhanandana Brajadhanahanjana
Jasodanandana Gajajanandjaya. Hey, Jamuna Tira Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hey, Jaya Gopi Janavallabha Girivara. Hey, Jaya Gopi Janavallabha Girivara. Jasodanandana Gajajanandjaya. Jasodanandana Gajajanandjaya. Jasodanandana Gajajanandjaya. Hey, Jamuna Tira Vane Rahim. Hey, Jamuna Tira Vane Rahim. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gaur Premanande Hari Hari Bol Srila Prabhupada Ki Jai. Srimad Bhagavatam, beginning of the new chapter, chapter 20 of Canto 9. And this is the dynasty of Puru, and verse number 1. Sri Badarainir Uvacha Purvavam Samprabhakshami Yatra Jostosi Bharata Yatra Rajasayo Vamsha Brahma Varnyas Cha Jajinre. Sri Badarayanu Vacha Puro Vamsa Pravakshami Yatra Jatoshi Bharata Yatra Raja Rajasayo Vamsha Brahmavasya Cha Jajine. Sri Badarayanu Vacha Puro Vamsa Pravakshami Yatra Jyotis Bharata Yatra Rajasayo Vamsha Brahmavasya Cha Jajine.
Ladies. Sri Vadarayani Uvacha. Sri Sukadev Goswami said, Puro Vamsam, the dynasty of Maharaj Puru, Prabhakshyami, now I shall narrate, Yatra, in which dynasty, Jata Asi, you were born, Bharata, O Maharaj Parikshit, descendant of Maharaj Bharat. Yatra, in which dynasty? Rajarisaya, all the kings were saintly. Vamsha, one after another. Brahma Vamsha, many Brahman dynasties. Cha, also. Chajire, grew up. Translation. Sukadev Goswami said, O Maharaj Parikshit, descendant of Maharaj Bharat, I shall now describe the dynasty of Puru, in which you were born, in which many saintly kings appeared, and from which many dynasties of Brahmins began. अनुवाद सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज भरत के वंशज महाराज परीक्षित, अब मैं पुरु के वंश का वर्णन करूंगा जिसमें तुम उत्पन्न हुए हो, जिसमें अनेक राजऋषि हुए हैं, जिनसे अनेक ब्राह्मण वंशों का प्रारंभ हुआ है। Srila Prabhupada's purport. There are many historical incidents by which we can understand that from Kshatriyas many Brahmanas have been born, and that from Brahmanas many Kshatriyas have been born. The Lord himself says in Bhagavad Gita 4:13,
Chaturvarnyam maya sristam guna karma vibhagasaha. According to the three modes of material nature and the work ascribed to them, the four divisions of human society were created by me. Unquote. Therefore, regardless of the family in which one takes birth, when one is qualified with symptoms of a particular section, he is to be described accordingly. Ya lakshanam proktam. One's place in the Varna division of society is determined according to one's symptoms or qualities. This is maintained everywhere in the Shastras. Birth is a secondary consideration. The first consideration is one's qualities and activities. तात्पर्य, इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हुए हैं जिनसे हमें ज्ञात होता है कि क्षत्रियों से अनेक ब्राह्मण उत्पन्न हुए और ब्राह्मणों से अनेक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में 4th अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने प्रकृति के तीनों गुणों तथा उनके कार्यों के अनुसार मानव समाज को 4 विभागों में बांटा है। अतएव कोई चाहे जिस कुल में जन्म ले, जब वह किसी विशेष वर्ग के लक्षणों से युक्त होता है तो उसका वर्णन उसी के अनुसार किया जाता है। यत लक्षणम प्रोक्तम। समाज के किसी वर्ण में मनुष्य का स्थान उसके लक्षणों या गुणों के अनुसार निश्चित होता है। शास्त्रों में सर्वत्र यही कथन मिलता है। जन्म तो गौण है, पहले तो मनुष्य के गुण तथा कर्म पर विचार किया जाता है। चक्षु उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचकौपातरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So you're a Brahmana, yes? Yes. What is your occupation? I pull a rickshaw. तो कोई व्यक्ति पूछते हैं किसी से, आप ब्राह्मण हैं? बोले हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा, तो आपका पेशा क्या है? बोले मैं रिक्शा चलाता हूँ। Hare Krishna. So this is going on today because one is born in a Brahmin family, one automatically considers themselves a Brahmana. तो आजकल इस तरह से चल रहा है, क्योंकि किसी व्यक्ति का जन्म होता है ब्राह्मण परिवार में तो वो स्वतः अपने आप को ब्राह्मण ही मानने लगता है। One is not judged by birth, as Prabhupada mentions here. Birth is considered to be the secondary consideration, although it has some merit in itself. तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जन्म अपने आप में पर्याप्त नहीं है, जन्म तो गौण है, लेकिन जन्म का भी थोड़ा महत्व तो निश्चित रूप से रहता है। One is born in a particular type of Varna family, then that tendency will be more prominent. But unless one performs the activity according to that Varna, one cannot be labeled according to one's birth. यदि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है तो निश्चित रूप से उसमें ज्यादा प्रवृत्ति रहेगी ब्राह्मण के कार्य करने के प्रति, लेकिन यदि जब वो कार्य करता है तो वही विशेष है उसको बताने के लिए कि वो ब्राह्मण है या कौन। Everything is determined by activities and the symptoms of those activities, which perform a certain result. तो उसकी जो स्थिति है वो इसके कार्यों के द्वारा
और कार्यों का क्या परिणाम है या क्या लक्षण है, उसके माध्यम से ही निर्धारित होती है। So the activities of the Brahmins are mentioned in the Shastras. तो ब्राह्मणों के कार्यों को शास्त्र में बताया गया है। Patan patan, yajan yajan, dana pratigraha. To know the scriptures well, Vedavati, तो and to know the scriptures well and to be able to teach the scriptures also. ब्राह्मणों के कार्यों को बताया गया है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, शास्त्रों को जानना और साथ में शास्त्रों को पढ़ाना, And to worship the deity, the Supreme Lord in his Archavigraha form, and to be able to teach others the science of Pancharatriki, or worship. भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करना, पूजा करना और दूसरों को भी पंचरात्र विधि सिखाना, And to also give charitable gifts to others and to accept charity. और साथ में दूसरों को दान देना और साथ में उपहार या दान स्वीकार करना। Brahmanas will not keep a bank account. ब्राह्मण का अपना बैंक अकाउंट नहीं रखते हैं। Whatever they receive, they will use, and whatever extra is there, they will offer in charity to some worthy situation, some worthy person, some worthy preaching. तो जो उन्हें दान प्राप्त होता है उसे वे उपयोग करते हैं और जो अतिरिक्त बचा रह जाता है उसे वे किसी योग्य व्यक्ति को किसी योग्य सेवा के लिए दान में दे देते हैं। They're not greedy for material gain, भौतिक लाभ के लिए वो लोभी नहीं होते हैं, but they will accept material gain and use what is necessary and pass the rest on for where it's needed. भौतिक संपदा को स्वीकार करते हैं, जितना उपयोगी है उतना, और बाकी को दूसरों को दे देते हैं। In other words, they will give in charity. They will give in दूसरे charity. शब्दों में वो उसे दान में दे देते हैं। When Lord Ramachandra was so pleased by the activities of the Brahmanas, he rewarded them way beyond their needs. He तो gave them so much gold. जब ब्राह्मणों के कार्यों से भगवान रामचंद्र संतुष्ट हुए थे तो उन्होंने उनकी कल्पना के परे ही उन्हें दान दिया, बहुत सारा सोना दान में दिया। He was giving them so much gold they couldn't even carry it away. इतना सोना दिया दान में कि उससे वे लेके भी नहीं जा पा रहे थे, So they gave it back to him, तो उन्होंने वापस भगवान रामचंद्र को लौटा दिया। which you don't really find quite common, that when you receive some gift, you give it back to the gift giver. But in this case, they gave it back to the Lord. साधारणतः देखने को नहीं मिलता है कि जब कोई उपहार दिया जाए फिर हम उसको वापस उसी को लौटा दें, लेकिन इस केस में उन्होंने वापस भगवान को ही लौटा दिया, ब्राह्मणों ने। So this is very, very popular deviation even today. According to birth, one is designated accordingly. तो आज भी हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्था फैली हुई है कि जन्म के आधार पे हमें ब्राह्मण है या क्षत्रिय है इसका निर्धारण किया जाता है। And one will take up the occupation of a brahmana just to make a living. और लोग ब्राह्मण का पेशा स्वीकार करते हैं आजीविका कमाने के लिए। In other words, I'm a Brahmin, you should give me charity. I do some ashibad. I do some puja for you. You can't figure out what this puja is because I just created this new puja. It is sanctioned in the most gupta of all scriptures. तो आजकल ब्राह्मण का अर्थ हो गया है कि जो दान स्वीकार करे, मैं आपके लिए कुछ पूजा करूंगा, कुछ यज्ञ करूंगा, और पूजा आपको समझ में नहीं आएगी क्या पूजा हो रही है, और बहुत ही गुप्त शास्त्रों में उसका वर्णन है, और फिर उसके बाद आपसे दान ले लूंगा। But of course, it's proper to reward the brahmanas for their service. This is the culture, the etiquette. तो लेकिन ब्राह्मणों को उनकी सेवाओं के लिए
हमें सम्मानित करना चाहिए, दान देना चाहिए, ये तो संस्कार और संस्कृति है। So when Lord Shiva, his wife Parvati, she came to Shiva, she said, "My dear Prabhu, you are very, very worshipped by people everywhere in the world, in the universe, and you have so many outstanding achievements, but you don't even have a house." तो एक बार भगवान शिव के पास पार्वती देवी आती हैं और कहती हैं कि आप पूरे विश्व में सभी जगह प्रसिद्ध हैं और बहुत सारी उपलब्धियां आपने अर्जित की हैं, सेवाएं की हैं, लेकिन एक बात है कि हमारे पास घर ही नहीं है। Shiva wasn't so interested in getting a house, but Parvati was saying, "No, no, we should have a house." तो शिव जी कोई रुचि नहीं थी कि कोई हमें घर हो हमारे पास, लेकिन पार्वती देवी ने कहा नहीं, हमारे को घर तो चाहिए। So Shiva wanted to please Parvati, so he had a house built. तो शिव जी ने पार्वती देवी को प्रसन्न करने के लिए एक घर बना दिया And the next program was a housewarming ceremony. और गृह प्रवेश का एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया। And you inaugurate the new house, you have a big yajna, and you also invite brahmanas and other respectable people. तो जब इस तरह आयोजन होता है तो उसमें यज्ञ होता है, ब्राह्मणों का आमंत्रण होता है और अन्य सम्मानित व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। And then at the end, you have to give charity to the brahmanas. और फिर अंत में ब्राह्मणों को दान You have दिया to give जाता है, some gifts to the brahmanas कुछ उपहार दिए जाते हैं or some dakshin. या फिर दक्षिणा के रूप। But when Shiva was about to give some dakshin, he realized, I don't have anything. तो जब शिव लेकिन जब दक्षिणा देने वाले थे तो उन्हें एहसास हुआ कि अपने पास तो कुछ है ही नहीं। He couldn't give any in charity to the Brahmins. ब्राह्मणों को दक्षिणा में कुछ दे ही नहीं पाए वो। So he gave the house. तो तो उन्होंने अपना घर ही दे दिया दक्षिणा में। And he was back underneath the tree again. फिर से पेड़ के नीचे ही आ गए वापस। So it's dutiful to reward the Brahmins. तो ये कठिन है कई बार ब्राह्मणों को दान संतुष्ट करना, दान दे पाना। But Shiva is not interested in any place. He has his Kailash abode. शिव जी की किसी जगह में कोई रुचि नहीं, कैलाश धाम उनका उसी में वो निवास है। When Srila Bhakti Vinod Thakur was present, there were many people, many Brahmanas, were claiming that they were Brahmanas simply because they were born in a Brahmin family. जब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उपस्थित थे तो कई ऐसे लोग थे जो अपने को ब्राह्मण होने का दावा करते थे, इसी कारण कि हमारा जन्म हुआ है ब्राह्मण परिवार में। And in the scriptures it says the Brahmins are the best of all persons. शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण जो हैं सभी व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। So they were claiming, Brahmins were claiming that we are the best, we are the highest in society. तो ऐसे जो ब्राह्मण उस समय थे वो कह रहे थे कि हम सबसे अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, समाज में सबसे ऊंचा स्थान हमारा ही है। But Bhakti Vinod Thakur knows that Brahman is part of the Varnashram system, therefore it's material. श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जानते थे कि ब्राह्मण जो है वर्णाश्रम व्यवस्था में ही है, इसलिए वो भौतिक उपाधि है। It's still within the realm of the material arrangement. ये भौतिक आयोजनों के अंतर्गत है। So those who actually become Vaishnavas, they are the superior to the Brahmanas. वास्तव में जो वैष्णव बन जाते हैं वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हो जाते हैं। So Bhakti Vinod Thakur was fighting that principle that yes, you say Brahmins are the greatest, but actually those who take up devotional service, they are superior to the Brahmins. They are Brahmins themselves, but superior to the Brahmins. तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस सिद्धांत को जोर दे रहे थे कि हाँ ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन जब कोई भक्ति ग्रहण करता है तो वो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हो जाता है। This was going back and forth, many arguments and debates. तो इस तरह उनके साथ तर्क वितर्क चल रहा था। So they wanted to settle this what do we say, contention, this discussion. तो इस विचार को वो एक अंतिम निर्णय देना चाहते थे, ब्राह्मण और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर दोनों। So there was a big program arranged in Midnapur,
And Bhaktivinoda Thakur was meant to go and represent the Vaishnavas and present the principle of Vaishnavism as superior to the Brahmanas. तो एक बड़े एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें श्रील भक्तिविनोद ठाकुर वैष्णवों का प्रतिनिधित्व करते हुए जाने वाले थे और ये बताने वाले थे वैष्णव कैसे श्रेष्ठ हैं ब्राह्मणों से। And so there was going to be a debate तो एक वहां पे वाद विवाद होने वाला था to settle this argument. ताकि इस बहस का निर्णय निकल के आ पाए। But when time came for Bhaktivinoda to go, he became very sick with rheumatic fever and he could not go. लेकिन जब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जाने वाले थे तब उस समय बहुत ही उन्हें बुखार आ गया और वो जा नहीं पाए। And so his son, Bhaktisiddhanta Saraswati, had written one small, not small, but one book, Brahmins and Vaishnavas. Maybe you've seen that book. तो उनके जो पुत्र थे श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ब्राह्मण और वैष्णव। Yeah, this book is available in ISKCON. It was originally written in Bengali, but since then it's been translated into English also. ये पुस्तक इस्कॉन में भी उपलब्ध है। पहले बंगाली में ये लिखी गई थी लेकिन अभी इंग्लिश में भी उपलब्ध है। So Bhaktisiddhanta Saraswati showed his father, Bhaktivinoda Thakur, what he had done. And his father said, "Oh, you are the perfect person to represent me. You go." श्रील भक्तिविनोद ठाकुर को उन्होंने ये पुस्तक दिखाई तो उन्होंने कहा कि हाँ आप सही व्यक्ति हैं इस सभा में जाने के लिए, आप जाइए प्रतिनिधित्व करने के And at that time, this was in the year 1911, Bhaktisiddhanta Saraswati was not at all well known as a scholar or even as a Vaishnava. 1911 की बात है। उस समय श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर वैष्णव के रूप में या विद्वान के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे। He was a Vaishnava, but he had no popularity at that time. वैष्णव तो थे लेकिन प्रसिद्धि उतनी नहीं प्राप्त हुई थी अभी। So he went to Midnapore. It was a 3-day debate, September 9, 10, and 11, year 1911. तो वो 1911 में सितंबर में 9, 10, 11 तारीख को उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए So गए। they asked Bhaktisiddhanta Saraswati to speak first. तो उन्होंने पहले ब्राह्मणों ने पहले उन्हीं से बोलने के लिए कहा And hundreds of people came to hear the debate. और कई हजारों लोग आए थे उस And को the सुनने के लिए। there were many Brahmins there, बहुत सारे ब्राह्मण भी वहां उपस्थित थे and they were going to speak also. And they were also meant to speak. और वे भी बोलने वाले थे। So Bhaktisiddhanta Saraswati started off by saying, quoting verses from the scriptures describing how glorious it is to actually take birth in a Brahmin family. तो श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने शुरू किया। पहले उन्होंने ऐसे ऐसे श्लोक शास्त्र बताने शुरू किए जिसमें बताया गया कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना कितना बड़ा सौभाग्य है। And he was quoting verse after verse glorifying the Brahmins. एक के बाद एक श्लोक वो बोले जा रहे थे ब्राह्मणों की महिमा में। And the Brahmins were thinking, "Ah, he's on our side." ब्राह्मण सोच रहे थे अरे ये तो अपनी तरफ ही है। But then at one point in his lecture, he said, "But even though one is born in a Brahmin family, if they are not exhibiting the qualities of a Brahmin, then they have to be designated according to those activities." लेकिन एक समय उन्होंने प्रवचन में कहा लेकिन यदि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने पे ब्राह्मण के गुणों को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं और तो फिर उन्हें जिस तरह वो कार्य कर रहे हैं उसी वर्ण में रखा जाएगा न कि ब्राह्मण वर्ण में। And the Vaishnavas, they are also superior to the Brahmins because they are worshiping the Supreme Personality of Godhead in devotion. साथ ही ये कहा कि जो वैष्णव हैं और ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो भक्ति भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर रहे He हैं। quoted that verse, Gopi Bhatter Padeka Malayor Dasa Dasa Anudas, spoken by Sri Chaitanya Mahaprabhu, where he describes that actually devotional service to the Supreme Personality of Godhead, as servant of the servant of the servant of the servant, is superior to all of the designations in the Varnashram system. साथ ही चैतन्य महाप्रभु ने जो श्लोक कहा है गोपी बढ़तु पद कमलयो दास दासानुदास, उसको उन्होंने उदाहरण दिया और कहा कि जब कोई
भगवान की सेवा करता है दास के दास के दास के दास के रूप में, तो ये सबसे श्रेष्ठ है। And he spoke with such power and such authority. Everybody was amazed. Who is this sadhu? तो इस अधिकार से और इतना शक्तिपूर्वक उन्होंने ये बातें अपनी प्रस्तुत की कि सभी दंग रह गए कि ये कौन साधु आ गए हैं। And everybody was cheering the sadhu. They were all happy. और सभी बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश हो रहे थे उन्हें देख And के। the Brahmins started to realize that they have no argument, so they turned around and left. और ब्राह्मण देखने लगे एक दूसरे को कि अभी तो हमारे पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, And तो वो वापस चले गए। all the people that were there, they wanted to touch the feet of Bhakti Siddhanta, so they come rushing up. जितने लोग वहां थे वो सब उनके पैर छूना चाहते थे, तो वो सभी दौड़ते हुए उनकी तरफ आए। The police were there, so they controlled the crowd. They took Bhakti Siddhanta Saraswati in the back area, washed his feet with buckets of water, and threw it on everybody. तो पुलिस बीच में आई और पुलिस ने उनको लेके गई पीछे, और पुलिस ने शीला भक्तन साहब ठाकुर के चरण कमल धोए और उस पानी को फिर जनता पे फेंक दिया। Padasnan. पाद स्नान हो गया। So, when that was established, the Brahmanas lost their influence. Bhakti Siddhanta Saraswati had really established that, yes, Brahmins are glorious, but unless one becomes a Vaishnavi, he can't even save himself, what to speak about others. जब इस तरह वैष्णव की श्रेष्ठता स्थापित हुई तो ब्राह्मणों का प्रभाव कम हो गया। बताया कि ब्राह्मण निश्चित रूप से श्रेष्ठ हैं, लेकिन जब कोई वैष्णव हो जाते हैं तो ब्राह्मणों से उच्च स्तर पे आ जाते हैं। And one has to perform the activities of a Brahmin. और व्यक्ति को ब्राह्मणों के कार्य भी करने हैं ब्राह्मण कहलाने के लिए। So in our society, Srila Prabhupada began by teaching Brahminical culture to all the devotees as they were coming into the society. तो हमारे इस्कॉन संघ में श्रील प्रभुपाद ने जो भी भक्त इसमें जुड़ रहे थे उन्हें ब्राह्मण संस्कृति का प्रशिक्षण देना शुरू किया। To develop the qualities of a Brahmin as mentioned in the Bhagavad Gita in the 18th chapter, and to perform activities of Brahminical culture. तो जिस तरह भगवद गीता 18 अध्याय बताया है, ब्राह्मण के गुणों का विकास करने के लिए और ब्राह्मण के कार्य करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। But he said, you're not Brahmin, you're Vaishnava. You're serving as in Brahmin Varna, but you actually are Vaishnava. Therefore, it's Daivi Vanashram, not material Vanashram. श्रील प्रभुपाद ने यह भी कहा कि आप भले ही ब्राह्मण के कार्य में लगे हैं, लेकिन आप वैष्णव हैं, इसलिए ये जो वर्णाश्रम है ये दैवी वर्णाश्रम है, भौतिक वर्णाश्रम नहीं है। And that's what Prabhupada's movement was, to first establish a Brahminical culture where a class of persons who had Brahminical qualities can also learn the different subjects and teach to others. तो लेकिन पहले श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य था कि ब्राह्मण संस्कृति का निर्माण किया जाए, ताकि जिनके अंदर ब्राह्मण गुण हैं वे इसमें जुड़ें, वे सीखें और अन्यों को भी सिखाएं। And Prabhupada wanted to establish that as his big, very important part of his movement, that people work according to their nature and their activities, and they are designated not by so much by the activities, but they're designated as Vaishnavas. श्रील प्रभुपाद साथ में ये स्थापित करना चाहते थे कि इस संस्था में सभी लोग अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, गुणों के अनुसार कार्य करें, लेकिन कार्यों के आधार पे नहीं, वे एक वैष्णव के रूप में उनकी पहचान हो। So Prabhupada pushed this point. We still have to establish spiritual Varnashram. प्रभुपाद ने इस बात पे जोर दिया कि हमें आध्यात्मिक वर्णाश्रम का निर्माण करना है। And that means Prabhupada wanted what is called the Varnashram College. तो इसको प्रभुपाद जी कहते थे वर्णाश्रम महाविद्यालय। The class of Brahmanas would teach all the other skills to the different devotees according to their nature. ब्राह्मण वर्ण के लोग अन्य लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार अलग-अलग कार्य सिखाएंगे। And Prabhupada explained it in detail in one morning walk conversation with Ridananda Maharaj, where there was a lot of questions and answers based on this principle.
तो इस विषय पे हृदयानंद महाराज के साथ एक प्रातःकालीन ब्राह्मण में प्रभुपाद जी ने बहुत सारी चीजें बताई। And the point was that education is the foundation for uplifting all of the other devotees according to the nature that they may exhibit. तो उन्होंने उसका पॉइंट डिस्कशन का मुख्य ये था कि जो शिक्षा है उसी के आधार पे अलग अलग भक्तों में जो गुण हैं, तो यदि हम शिक्षा देंगे तभी उन गुणों के अनुसार वे कार्य कर पाएंगे। I met one devotee in our society. He said, I was trained as a Brahmana for so many years, but I realized I'm not a Brahmin. I'm a Kshatriya. तो एक संस्था में ऐसे ही एक भक्त थे, वो बोले कि मुझे कई सालों तक ऐसा ब्राह्मण का प्रशिक्षण दिया गया बाहर, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि मैं ब्राह्मण के गुण नहीं, मेरे अंदर क्षत्रिय के गुण हैं। In other words, I'm performing service as a Kshatriya, and that is my nature, although I'm a Vaishnava. दूसरे शब्दों में कहा जाए कि मेरा स्वभाव क्षत्रिय की तरह है, तो मैं उस तरह सेवाएं कर रहा हूँ, हालांकि हम वैष्णव हैं। And Prabhupada said the Brahmanas should learn all of the skills and be able to teach all of these skills to the other devotees according to their different natures. That means Kshatriya and Vaishya. तो श्रील प्रभुपाद ने जोर देकर कहा कि ब्राह्मणों को सारी विधाएं, सारी कलाएं सीखनी चाहिए और अन्य लोगों को शिक्षा देनी चाहिए कि किसकी जिसकी जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार उसे शिक्षा देके सेवा में लगाया जाए। But the designation is Vaishnava. Doesn't matter what service you do, you're a Vaishnava. लेकिन मुख्य बात यह है कि आप कोई भी सेवा में संयुक्त हो, लेकिन हैं हमारी पहचान वैष्णव के रूप में। If you're doing Brahminical service, you're not a Brahmin, you're doing Brahminical service, but you're a Vaishnava. आप ब्राह्मण के उपयुक्त सेवाओं में लगे हुए हैं, लेकिन ब्राह्मण की उपाधि नहीं है, उपाधि वैष्णव की है। Prabhupada gave the example personally. He said, I'm teaching you how to wash the floor, but I'm not a floor washer. प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि फर्श कैसे धोना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कार्य फर्श धोना है। So, because I'm teaching doesn't mean I am that of that nature. I'm just teaching you so you can learn, and we can have what is called the social society where people work according to their nature, and in that way they'll excel in offering their services. तो लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं, इसलिए सिखा रहे हैं ताकि हम संयुक्त रूप से अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार सेवा कर सकें, आगे बढ़ सकें। So that's Prabhupada's mission, and he said when he left, he said, "This is not yet established. We have to establish this Daivi Vanashram." तो ये शिल प्रभुपाद का आंदोलन है। जब शिल प्रभुपाद इस संसार से प्रस्थान कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी भी इसकी पूरी तरह स्थापना नहीं हुई है, हमें दैवी वर्णाश्रम को स्थापित करना है अभी। And he said, it's best done in the farm communities. तो प्रभुपाद जी ने कहा सबसे अच्छा ये संभव है जब कृषि समुदायों का विकास किया जाए, फार्म He कम्युनिटीज। said, get these farms तो उन्होंने जो है ऐसे कृषि समुदाय का विकास भी किया, and फॉर्म्स लिए, establish Vanashram, Daivi Vanashram. और वहाँ पे दैवी वर्णाश्रम हम स्थापित कर सकते हैं। But education is first. लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो है शिक्षा दिया जाना, And prior to education is evaluation. और शिक्षा के पहले निरीक्षण करना पड़ेगा कि कौन किस योग्य है। The leaders are supposed to see the devotees, see what is their nature, and try to educate them according to that nature, and then engage that nature in devotional service. तो जो संस्था का जो नेतृत्व करते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो हर एक की प्रवृत्ति को देखें, प्रवृत्ति के अनुसार उनको पहले शिक्षा दें और उस शिक्षा के आधार पे उन्हें सेवाओं में नियुक्त करें। And that will produce the quality of service and satisfy that devotee. Will they be fixed in their service? उससे क्या होगा, उससे सेवा में भी गुणवत्ता आएगी और जो सेवा करने वाला भक्त है वो भी संतुष्ट होगा। People come in our society, but they don't stay because they're not engaged properly. लोग हमारी संस्था में आते हैं लेकिन वो रुक नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें सही रूप से सेवा में नहीं लगाया जा पाता है। You can't engage everybody and to do everything. You have to engage people according to their nature.
आप हर व्यक्ति को हर सेवा में नहीं लगा सकते हैं, उसकी प्रकृति स्वभाव के अनुसार आपको उसको नियुक्त करना And पड़ेगा। Prabhupada said it's the duty of the spiritual master and the leaders of the temples to see what is the nature of the devotee and find service accordingly. तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये आध्यात्मिक गुरु और संस्था के जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका कर्तव्य है कि उस भक्त के स्वभाव को समझें और उसके अनुसार उसके लिए सेवा ढूंढें। Like I know one temple, all the pujaris are mostly kshatriyas. जैसे एक मंदिर में मैं गया तो वहां पे जितने पुजारी हैं उनके अंदर मुख्य रूप से क्षत्रियों के ही गुण हैं। And that's a problem. और फिर ये तो एक समस्या है The kshatriyas need their own territory. क्योंकि क्षत्रियों को अपना अलग अलग राज्य चाहिए हर एक को। So they have to work together. That's hard. तो साथ में काम करना उनके लिए बड़ा कठिन है। The kshatriyas have to be in control. They have to have their own little organ, their own area of service where they can control it. क्षत्रियों का स्वभाव है कि उनको अपना एक क्षेत्र चाहिए जिसपे कि उनका नियंत्रण हो, उनका राज चले। But Brahmins can work together. ब्राह्मणों की बात करें तो वो साथ में काम But कर सकते हैं। but Pujari work is Brahminical work. It's not Kshatriya work. पुजारी की जो सेवा है वो ब्राह्मण की उपयुक्त सेवा है, क्षत्रियों के लिए उपयुक्त नहीं है। So they're always discussing what to do. तो फिर वो उस मंदिर में हमें चर्चा करते हैं कि क्या करें अब, क्या करें? Because everybody wants to give their opinion. क्योंकि हर कोई अपनी सलाह प्रस्तुत करना चाहता है। So that's just an example how people are not engaged according to their nature. It makes it hard for the service to develop what we say in a progressive way. तो ये एक समस्या है कि जब लोगों को स्वभाव के अनुसार सेवा में नहीं लगाया जाता है, तो वो सेवा का विकास नहीं होता है। But you might say, well, a devotee should be willing to do any service at any time, right? We say that, right? लेकिन कोई कह सकता है कि भक्त को तैयार रहना चाहिए, किसी भी समय कोई भी सेवा आए, करना चाहिए। And that's how our society started because Prabhupada was on an emergency program because he knew he didn't have much time left. So he was trying to engage people as much as he could and said, just do the service and Krishna will help you. और हमारी संस्था की शुरुआत ऐसे ही दौर पे हुई थी क्योंकि श्रील प्रभुपाद के आपातकालीन स्थिति थी उस समय। तो जो भी भक्त आए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा अलग अलग सेवाओं में लगा दिया, साथ में कहा आप सेवा करते जाइए, कृष्ण मदद करेंगे। But as time went on, we saw how devotees would come and go because they weren't really engaged properly. तो उस समय ऐसा पता नहीं चल पा रहा था कि कब भक्त आ रहे हैं, कब भक्त जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि कुछ हो सकता है सही से सेवा में नहीं लग पाए। And so this evaluation and education is fundamental for development. तो इसलिए पहले तो उसको जांचना और उसके बाद उनको शिक्षा देना भक्तों को बहुत ही जरूरी है उनके विकास के लिए। But you might say, well, devotees should be able to do anything. They have to surrender, right? आप कह सकते हैं लेकिन भक्त को सब कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। A devotee will do that. They'll surrender. भक्त तो ऐसा करेंगे, समर्पण भी करेंगे, But after some time, if they're not engaged nicely according to their nature, they will not stay enthusiastic in their service. लेकिन यदि उनको उनकी प्रवृत्ति के अनुसार सेवा नहीं दी गई तो कुछ समय बाद उनमें वो उत्साह नहीं रहेगा। But on the highest platform, when a person is above all of their material tendencies, they can do any service at any time. दूसरी तरफ जब भौतिक प्रवृत्तियों या भौतिक गुणों के ऊपर उठ जाता है, कोई उच्च स्तर पर आ जाते हैं, तब कोई भी सेवा वो संपन्न कर लेते हैं। But we can't expect everybody to be on that higher platform immediately. That's something that comes by purification. लेकिन हमें आशा नहीं कर सकते कि तुरंत ही व्यक्ति उस उच्च स्तर पे आ जाएगा। ये धीरे धीरे जब हृदय का शुद्धिकरण होगा तब ये अवस्था आएगी। So we have the Varnashram system here, but it's not organized in that way. People are working accordingly, but it's not in an organized way. तो वर्णाश्रम व्यवस्था अभी हमने आरंभ की है या है, लेकिन ये व्यवस्थित नहीं है। लोग सेवा में तो लगे हैं लेकिन उतनी व्यवस्थितता से अभी हो नहीं पा रहा है। Like Prabhupada said, establish these farms and build a Varnashram college, have the Brahmins educate
everyone else in the different varnas. तो प्रभुपाद जी ने कहा कृषि समुदाय का विकास कीजिए, वर्णाश्रम कॉलेज स्थापित कीजिए और उसमें ब्राह्मण सभी को सिखाएं उनके अपनी अपनी प्रवृत्तियों के आधार पे। Prabhupada started Gurukul. He used to get reports from the Gurukul teachers how the students were doing. प्रभुपाद जी ने गुरुकुल की व्यवस्था स्थापना की और गुरुकुल के शिक्षकों से पूछते थे कि कैसा चल रहा है विद्यार्थियों का। So there was one report where they were on a farm. This was in Hyderabad, and all the boys were in the classrooms learning, Brahminical subjects, philosophy. But there was one boy. He was always causing trouble. He didn't want to learn anything, and he was always making trouble in the class. तो हैदराबाद में ऐसे ही कृषि समुदाय में शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ा रहे थे, ब्राह्मण की शिक्षाएं दे रहे थे, लेकिन एक बच्चा बहुत उद्दंड था, वो समझता नहीं था और हमेशा परेशान करता रहता था। So that report was given to Prabhupada. Prabhupada said he's not meant for Brahminical training. Put him on the farm and give him some work. तो प्रभुपाद जी तक खबर पहुंचाई गई। प्रभुपाद जी ने कहा वो ब्राह्मण शिक्षा के लिए लायक ही नहीं है, उसको आप इसमें कृषि मैदान में भेजिए, यहीं पे कुछ सेवा में So लगाइए। I'm just bringing these up as examples because this is still Prabhupada's mission that he needs to really foment into a social system that will engage people nicely, and at the same time, the results in that engagement will Krishna consciousness will spread very fast. तो मैं ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ इसलिए ताकि ये जो शिल प्रभुपाद का जो मिशन है इसको हम स्थापित करें और सामाजिक व्यवस्था में इस तरह से ये स्थापित हो कि सभी लोग अपनी प्रवृत्ति के अनुसार सेवा में युक्त हों और उससे जो परिणाम प्राप्त हों उससे कृष्ण भक्ति का प्रचार हो पाए। So we're not Brahmanas, we're not Kshatriyas, we're not Vaishyas, we're not Sudras, we're Vaishyas, Vaishnavas. Some of us are Vaishyas, but Vaishnavas in the sense that we engage in devotional service to the Supreme Lord and serve in a certain way according to the designation of a particular activity aligned with a certain type of varna. Good हम luck. हम ब्राह्मण क्षत्रिय See, he's a वैश्य Brahmin because he has a good memory. If I was talking to a Kshatriya, he would ask me to repeat it 5 times, तो हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध नहीं हैं, हम हैं वैष्णव। क्योंकि हम जब अलग अलग सेवाओं में हम लगते हैं तो वो हमारे एक उपाधि के अनुसार हम सेवा में नियुक्त होते हैं, लेकिन वास्तव में चूंकि हम भगवान की भक्ति में सेवा में संलग्न हैं तो हम वैष्णव के रूप में हैं। Paka Brahman. हरे चरण प्रभु पक्के ब्राह्मण हैं। Yeah, when I was chanting the verses, he could tell that I was making mistakes because he would always say it different. And then I was thinking, yeah, he's definitely superior. He should be giving class. Because I make mistakes in the Sanskrit because I'm not a Brahmana. I'm not a Kshatriya. I'm not sure what I am. Anyway. Das, anudas. That's what I'm trying to be. Okay. Any questions, comments? The Varnas? Yes. Okay. प्रश्न? Let's see. What is a video person? What Varna is that? That's Sudra, I think. Anything to do with IT is Sudra. Prabhupada said, people say, well, I'm an engineer. Prabhupada said, you're a Sudra. I have my degree in ITT, this technical college. It's Sudra work, Silpa Vidya, that's all. It's a craft. Thank you, Maharaj, for the wonderful class.
Still want to ask you a question? Which is my tiny brain. Question that sometimes after joining the temple, devotees tends to go into their own zone of services rather than the services which are allotted to them. So in that case, everyone is disturbed. The management system and everything is disturbed. So shall the devotees be allotted in that area only, or what should be the correct way to? Well, go ahead. Yeah. प्रश्न ये है कि जैसे भक्ति जन में आगे बढ़ते हैं तो भक्तों को अलग अलग सेवाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन जो सेवाएं प्रदान की गई हैं उनकी अपेक्षा भक्त लोग ज़्यादा समय ज़्यादा शक्ति वहाँ देते हैं जो सेवाएं उन्हें करना पसंद है। तो ऐसी स्थिति में प्रबंधन गड़बड़ा जाता है, व्यवस्था भी गड़बड़ा जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए इस स्थिति को सुधारने के लिए? In order not to cause disturbance, one should do the service that is given to them. इसमें इस तरह अव्यवस्था नहीं फैलानी चाहिए। But जो then, सेवा प्रदान की गई है वही करनी चाहिए भक्त को। but then one can speak after and say, well, I think that I would, I can do better if you engage me in this particular service. लेकिन उसके बाद वो भक्त जाके मैनेजमेंट से कह सकता है कि अच्छा होगा यदि आप दूसरी सेवा मुझे लगाएं, वो मैं अच्छे से कर पाऊंगा। But surrender is higher than one's particular nature. लेकिन शरणागति और उच्च सिद्धांत है हमारे व्यक्तिगत स्वभाव की तुलना में। But the leader should be somewhat sensitive and observant how best to engage people so that doesn't happen. लेकिन लीडर की दृष्टि से देखें तो लीडर को संवेदनशील होना चाहिए कि कैसे इस व्यक्ति को हम अच्छे से अच्छे इसके स्वभाव के अनुसार सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। But the service must go on. That's important. That's most important. लेकिन फिर भी किसी परिस्थिति में जो सेवा दी गई है उसको हमें करते रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। Well, that's why Prabhupada, he did start it the same way, just giving people services because the service was needed, not consider whether people were qualified for that service or not. यदि श्रील प्रभुपाद के समय बात करें तो वो जो भक्त आ रहे थे उनको सेवाएं देते चले जा रहे थे, क्योंकि उस समय सेवा ही जो है मुख्य प्राथमिकता थी। ये नहीं था कि भक्त उसके योग्य है कि नहीं। Yeah, because a person will sometimes gravitate back to their nature, and they will not be able to do the service properly. But still, for the sake of keeping the service going, for the pleasure of the deity and the spiritual master, if one is given a service, they should surrender. तो हो सकता है कि फिर वो भक्त उस सेवा को अच्छे से कभी ना कर पाए, लेकिन फिर भी यदि प्रभुपाद गुरुदेव विग्रहों की प्रसन्नता के लिए जो सेवा हमें दी गई है वो हमें अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए शरणागति के भाव से। And then work it out later. और फिर बाद में इसको सुलझा लेंगे कि कौन सी सेवा अच्छी लगती है, कौन सी करनी है। That's why Prabhupada, for every project, there should be one ashram college. इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि कोई भी प्रोजेक्ट करना है उसके लिए वर्णाश्रम कॉलेज होना चाहिए। That was Bhakti Charu Maharaj's vision to establish that in Delan. That was his vision. शीला भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का यही एक विजन था, उनका ये मनोभाव था कि ऐसी व्यवस्था हमें स्थापित करनी है अमेरिका में, डीलैंड में। Because he knew this was Prabhupada's instructions for the future of our movement. ये वो जानते थे कि हमारे आंदोलन के भविष्य के लिए शीला प्रभुपाद जी ने यही उपदेश दिए हैं। Evaluation, education, and designation. Evaluate the person, educate them according to that evaluation, and then give them service according to that education. पहले उनको जांचना, फिर उनको प्रशिक्षित करना और बाद में उनको नियुक्ति प्रदान करना। तो इस तरह हमें हर व्यक्ति को उसको पहले जांचना है, स्वभाव के अनुसार शिक्षा देनी है और फिर उसको सेवा में नियुक्त करना है। But people will gravitate towards their tendency, and that's why things break down. लेकिन लोगों की मानसिकता क्या होती है, बार बार अपनी प्रवृत्तियां जो हैं उन्हीं में ही सेवा करने लग जाते हैं, इसलिए व्यवस्थाएं थोड़ी गड़बड़ हो जाती हैं। But
That shouldn't happen. लेकिन ऐसा वांछनीय नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, Surrender is higher. क्योंकि शरणागति जो है वो सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत है। And if a person needs some assistance in their service, that should be provided. और यदि उस भक्त को कुछ मदद की आवश्यकता है अपनी सेवाओं को करते हुए, तो वो मदद प्रदान की जानी चाहिए। And there are many examples in our society. Devotees wanting to do other services because they feel more inclined to those services. Sometimes it's just what they like, but then there is an inclination there, which of course, as Krishna says here, Chaturvanya Mayasya, he created the different varnas. But Kalo Sudra Sambhavan, in this age everyone is Sudra, so education is required. हमारे आंदोलन में ऐसे बहुत उदाहरण हैं कि भक्त लोग को जो सेवा दी गई वो दूसरी सेवा ही करना पसंद करते हैं क्योंकि वो उसे पसंद करते हैं। दूसरे ये है कि भगवान स्वयं कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, ये चारों वर्ण मैंने ही बनाए हैं, तो इसलिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो शिक्षा दी जाने की आवश्यकता है। Any other questions? You have a question too? And ladies? Any ladies? No? Okay. Sometimes if you go like this, then I think you're raising your hand. Here we go. Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj, for enlightening us on this very important topic. Yeah, most important. Maharaj, I personally feel that devotees have a reservation about different kinds of services, and there is a feeling that I will be spiritually more safe if I will engage in Brahminical services of Brahminical nature. Although services of lower nature like Kshatriya or Vaishya may be assigned by superior authorities, but this fear is there in the heart. So if you could please enlighten. I think that was the same question you asked, right? Yeah. तो प्रश्न ये है कि कई बार भक्तों को अलग अलग सेवाओं को लेकर उनके अलग अलग एक विचारधाराएं होती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि यदि जो ब्राह्मण की जो सेवाएं हैं जैसे श्रवण कीर्तन पूजा करना उसमें हम नियुक्त होंगे तो हम भक्ति में ज़्यादा सेफ रहेंगे, बजाय कि यदि हम क्षत्रिय वैश्य ऐसी सेवाओं में नियुक्त हो गए जो कि निम्न स्वभाव में आ रही हैं तो फिर हमारे भक्तियों को खतरा हो सकता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा स्पष्टीकरण प्रदान कीजिए। In 1996, the GBC did a survey to try to understand why people leave movement. 1996 में जीबीसी ने एक सर्वे किया ये समझने के लिए कि लोग हमारे आंदोलन को छोड़ के क्यों चले जाते It हैं। was quite an extensive and a very long-term survey they did. It took a long time, many, many months, maybe even more than that. And then they came up with 3 reasons why people leave. तो बहुत महीनों तक लंबे स्तर पे सर्वे किया गया और फिर अंत में 3 मुख्य ऐसे कारण निकल के आए कि जिनके कारण भक्त चले जाते हैं छोड़ के। The first reason is that they don't have loving relationships with other devotees. पहला कारण तो ये है कि उनके दूसरे भक्तों के साथ प्रेम का संपर्क नहीं स्थापित They हुआ। fail to establish a relationship with other devotees. दूसरे भक्तों का संबंध स्थापित करने में वे असफल रहे। And so they go back to the material world looking for relationships. तो फिर से लौट गए भौतिक जगत में संबंधों की तलाश में। The second one is connected with grihastas. And because grihastas could not somehow or other take care of their griha, their house, and so they had to leave and go out and get jobs in the secular world. दूसरा है कि दूसरा गृहस्थों से संबंधित है क्योंकि गृहस्थ जो है जब मंदिर के अंदर ही रहते थे तो वे उसके अनुसार अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पा रहे थे, तो फिर वो मंदिर से बाहर चले गए, बाहर भौतिक जगत में उन्होंने नौकरियां ली और वहां रहने लगे बाहर। The brahmachari drive,
joins the temple, stays brahmachari for some time, decides to move into grihastha ashram. Now he has so many responsibilities. He has to go out and get a job, and he can't maintain. He needs a house. He needs so many things. So it became an economic reason for people to leave. That was one of the reasons. तो दूसरा कारण उसी पे बता रहे हैं कि जैसे कोई ज्वाइन किया ब्रह्मचारी के रूप में, लेकिन बाद में गृहस्थ आश्रम में गए तो उनको बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो इसके कारण आर्थिक समस्याओं के चलते उनको फिर बाहर जाना पड़ता है। And the last one is they were using brahmachari as fundraisers. तीसरा कारण जो छोड़ के चले जाने का वो भक्तों का ये था कि ब्रह्मचारियों को फंड रेजर के रूप में उपयोग किया जा रहा था। Sending brahmacharis out simply to collect funds. ब्रह्मचारियों को भेजा जाता था बाहर सिर्फ पैसे इकट्ठा करने के लिए, Which develops a certain fruitive mentality. और जब ऐसी सेवा में कई बार एक सकाम कर्म की भावना आ जाती है, So they became weak in their renunciation. तो अपने वैराग्य में वो कमजोर पड़ते चले गए And many of them couldn't maintain their brahmacharya. और ब्रह्मचर्य का कई पालन नहीं कर पाए। So that was the three reasons. तो ये तीन कारण इस तरह जीबीसी ने And सर्वे में निकाले। all these reasons are due to the lack of vanashram, Daivi vanashram. Same, that's the reasons. We had the Daivi vanashram, we could somehow support all of these persons according to their different needs. तो इन तीनों कारणों का जो मुख्य कारण है वो है दैवी वर्णाश्रम व्यवस्था करना होना। यदि ऐसी व्यवस्था हमारे पास होती तो हम इन तीनों जो लोग हैं उनको सपोर्ट कर पाते उनकी आवश्यकताओं के अनुसार। So, yeah, Prabhupada could foresee that. He said, establish these vanashram colleges. Educate Brahmins, educate everyone else according to the different varnas. तो प्रभुपाद जी पहले ही ये इसको देख रहे थे, इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था की कि सभी को शिक्षा दी जाए, ब्राह्मणों को, ब्राह्मण सभी को शिक्षा भी दें आगे उनके वर्ण के अनुसार। The Brahmins, they should also learn to fight. And they can teach, martial arts to the Kshatriya. तो ब्राह्मणों को ये भी शिक्षा होनी चाहिए कि कैसे युद्ध करना है, ताकि वो क्षत्रिय स्वभाव वाले को युद्ध कला में प्रशिक्षित कर सकें। Not that all Brahmins have to learn all services, but collectively as a group, there should be all the services there that they can teach according to Kshatriya and Vaishya. Sudras don't need education. तो ऐसा नहीं कि हर ब्राह्मण को सभी विद्याएं सीखना आवश्यक है, लेकिन सामूहिक रूप से ब्राह्मणों का ऐसा समूह होना चाहिए कि वे क्षत्रियों को भी और वैश्यों को भी उनके स्वभाव के अनुसार सेवाएं दिखा सकें। So yeah, so this is now the concern, how to establish this Daivi Vanashram. तो अभी चिंता का विषय ये है कि इस दैव वर्णाश्रम को स्थापित कैसे करना है। Bring devotees in, educate them, and keep them. Don't lose them because they're not being engaged properly or not getting the proper education. तो भक्त पहले बनाइए, उनको शिक्षा दीजिए और उनको फिर बना के रखिए, ऐसा नहीं कि वो फिर चले जाएं। Generally, nobody leaves our society for a superior spiritual group. They leave because they're not be able to find their place within the society. भक्त लोग साधारणतः इसलिए छोड़ के कोई नहीं जाते हैं कि उन्हें कोई और अच्छा आध्यात्मिक गुरु या संस्था इससे ज्यादा चाहिए। साधारणतः वे इसलिए छोड़ के जाते हैं कि संस्था में अपना स्थान वो समझ नहीं पाए, बना नहीं। As we mentioned, evaluation, education, and engagement. जैसा मैंने बताया, पहले उनको जांचना, फिर उनको शिक्षा देना और फिर उनको सेवा में नियुक्त करना। Varna, we have to give Brahma Vidya, we have to do that, but we also have to give, Varna Vidya also. तो ब्रह्म विद्या के साथ साथ उनको वर्ण विद्या भी हमें देनी होगी। Because, just like the Prabhupada could see, the devotees don't know how to wash the floor. जिस तरह उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी देख सके कि भक्तों को ये भी नहीं आता कि फर्श कैसे साफ करना है। So Prabhupada said, bring me 2 buckets.
one with water and one without water. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि 2 बाल्टी मंगवाई, एक पानी से भरी हुई और एक खाली। So he got down on his knees, hands and knees, and he took the wet rag. He washed one part of the floor, squeezed out the rag in the other bucket, took the dry rag and dried the floor where he washed, and he said, "This is how you wash the floor." तो Not like you प्रभु take a mop and you go this way, that way, and then the dirt goes this way and that way and this way. The mop pushes the dirt this way and that way. Some sticks on the mop, but 90% stays on the floor. Mops are useless, throw them out. तो प्रभुपाद जी ने भक्तों को सिखाया कि पहले कपड़ा लिया, उसको पानी गीला कपड़ा लेके पोंछा, फिर जो मैल है वो खाली बाल्टी में निकाला, फिर इस तरह सिखाया कि इस तरह से इसको साफ करना है, न कि ऐसा कि एक पोछा लगाया, इधर दिया, आधी धूल इधर, फिर इधर आधी धूल इधर, तो 90% धूल बिखर गई, 10% ही उसमें निकली बस। After you mop the floor, just let it dry. You'll see all the dirt still there. It's still there. तो इस तरह से यदि हम पोछा लगाते हैं तो फिर धूल वहीं की वहीं रह जाती है। Most of it. Some of it get caught in the mop, not most. ज्यादातर धूल थोड़ी बहुत बस So, पोछे में आ पाती है। so Prabhupada taught us how to wash the floor. So he says, I'm not a floor washer. I have to teach you because you don't know. तो प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया और साथ में बताया कि ये मेरा कार्य नहीं है, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि आप नहीं जानते हो। So the Brahmins are the teachers. They teach you how to fight. They teach you how to cook. They teach you how to worship. They teach you how to fix cars. They teach you how to, everything. They know all of the varnas and they can teach like that. तो इस तरह ब्राह्मण जो हैं हमें सिखाते हैं पूजा कैसे करना है, कार कैसे ठीक करनी है, सारे वर्णों को वो अलग-अलग शिक्षाएं प्रदान करते हैं। And then people can find services according to their nature, and then they can excel in that service. तो इस तरह स्वभाव के अनुसार सभी भक्त अपनी-अपनी सेवा में नियुक्त हो सकते हैं और उस सेवा में वो फिर प्रगति कर सकते हैं। And that's how our society will really grow. Because until we establish this, the society will not grow. It's growing, but not in the way it could grow. जब तक हम ये वर्णाश्रम व्यवस्था देवाश्रम नहीं लागू होगी तब तक संस्था उतना आगे नहीं बढ़ेगी, हालांकि आगे तो बढ़ रही है लेकिन और आगे बढ़ सकती है। Any other questions? Oh yeah. Did you ask your question yet? No, he didn't. You did ask? No. Okay. Hare Krishna Maharaj. Thank you for very nicely explaining about work of a Brahmana, difference between Brahmana and Vaishnava, and also like practical application, how devotees should act. Maharaj, I have two questions. Like first question is, like I have heard in lectures how Kali made Brahmanas, Kali made Rakshasas to take birth in Brahman family, so that the degradation could begin, or it could attack the headquarters of Varnashram. Kali arranged for demons to take birth in Brahman's family. Yeah, it's lack of Garbhadan samskara. Because of there's no samskaras. Once the samskaras are stopped, then there's no transition from one stage to another. Especially Garbhadan samskara. Apart from this, does Kali also have this power to like it happens by divine supervision that one is take births in particular family, like Brahmana family or Kshatriya family. So Kali made Rakshasas to take birth in Brahmana family. So does it also have some power? What is the question? Does it also have this power, Kali, that someone will take birth? Well, he sees who's not following. He doesn't have the power unless we give him the power. तो प्रश्न ये है कि जैसे ऐसा बताया जाता है कि कलयुग का जब आरंभ हुआ तो राक्षसा कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्म योनिषु, राक्षसों ने कली का आश्रय लिया, ब्राह्मण योनियों में चले गए। तो क्या कली के पास ये शक्ति है कि कली जो है ये तो भगवान की व्यवस्था से होता है कौन किस योनि में जाएगा, तो कलयुग क्या ऐसा कर सकता है?
mean, Maharaj Parikshit chastised Kali and said, "You can't stay in my kingdom." तो महाराज बता रहे हैं कि कलयुग के पास तो शक्ति नहीं है, लेकिन हम वो शक्ति देते हैं जब हम गलत गलत कार्यों में लिप्त होते हैं। जैसे महाराज परीक्षित कलयुग को डांटते हैं कि तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो। And he said, "You can only." And then Kali said, "Well, where can I stay? I'm still one of your progeny." कली ने कहा फिर मैं कहाँ जाऊं, मैं भी तो आपकी प्रजा ही हूँ। Well, he said, "Wherever there is illicit sex, intoxication, meeting, and gambling." And Kali said, "It's not anywhere in your kingdom that doesn't give me any place to stay." तो परीक्षित महाराज ने कहा जहाँ 4 पाप कर्म होते हैं वहां तुम चले जाओ। तो कली ने कहा आपके राज्य में 4 पाप कर्म है ही नहीं, तो फिर कहाँ जाऊं। But now it's everywhere. So Kali is having a field day, Kali is having a अभी अभी की Mahotsava, yeah. अभी की तरह नहीं है, अभी तो कली हर जगह ही है, महोत्सव हो रहा है। So, yeah, that's why if we make people Krishna conscious, the more we make Krishna conscious, then we push out Kali. इसलिए लोगों को कृष्ण भक्त बनाने की आवश्यकता है। जब वो कृष्ण भक्त बनेंगे तो कलयुग को दिक्का दे देंगे। Lord Chaitanya is Kali Yuga Pavana Kali Boyanasana Sri Sachinandana Nahamre. Kali goes, "Ain." Chaitanya Mahaprabhu takes the stick of bhakti and chases Kali. तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो कलयुग के दोषों का नाश करने वाले हैं। वो कलयुग को इस तरह हाथ में डंडी लेके डराएंगे तो कलयुग भाग जाएगा। Yeah. Kali is like a little dog and he runs away. कलयुग जो है एक छोटा कुत्ते की तरह निकल लेगा, पिल्ले की तरह। What is it? What is it? How do you say dog in Bengal? Kukuro. Kukuro, yeah. And it's the one verse in Kali Kukura, right? There's the one verse. I don't know, maybe you know that verse. तो बांग्ला में जिस तरह कुत्ते को कहते हैं कुकुर, तो एक श्लोक भी है इस तरह से, कली कुकुर। Yeah, Bhaktivinoda Thakur sings that verse. It's in that prayer. What is that prayer? Go Bhaja Godruma Kanana Kunja Vidum Bhaja Godruma Kali Kukura. He's there. He's a dog. And you take a stick and you chase the dog away. That stick is bhakti. Big stick. तो ये कली को है कुकुर से भी तुलना की गई है, और जब हम हाथ में छड़ी है या छड़ी वो है भक्ति की छड़ी, तो उससे जो है हम इस कली को दूर भगा सकते हैं। But because people are sinful, then Kali is, doing his job. लेकिन चूंकि लोग पाप कर्म में लगे हैं तो कली भी अपने काम में लगा हुआ है। We have the example in the Shastra where Diti approached Kashyapa for union. Kashyapa said, "This is not the time." तो हमें शास्त्रों में उदाहरण मिलता है कि जब दीति जो है कश्यप के पास जाती है कि मुझे आपका संग करना है, लेकिन कश्यप कहते हैं ये सही समय नहीं है इसके लिए। Shiva is riding along now at this time, in twilight time, with his ghost. Not the time. संध्या का समय है, शिव जी भ्रमण कर रहे हैं अपने पार्षदों के साथ, तो ये सही समय नहीं है। Diti was persistent. She pushed her husband and he gave in. And then who was born? Hiranyakashipu and Hiranyaksha. लेकिन दीति जो है उन्होंने पति कश्यप को मजबूर किया और इसके कारण हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे असुरों का जन्म हुआ। Kashyapa was a Brahmana. कश्यप तो ब्राह्मण थे लेकिन क्षत्रिय का जन्म हुआ। There's the example. So when you break the principles or you engage in sinful activities, you're inviting Kali, Kali to do his work. तो जब आप सिद्धांतों का खंडन करते हैं, पाप कार्यों में लिप्त होते हैं, तो आप कली को स्वयं ही आमंत्रण देते हैं। It says in the Srimad Bhagavatam, 7th canto, when the mode of goodness is prominent, the demigods are in control. श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद में आता है कि जब सतोगुण
की प्रधानता होती है तो देवता लोग नियंत्रण में आते हैं। When the देवता mode लोग of passion is prominent, the demons are in control. जब रजोगुण की प्रधानता होती है तो फिर असुर लोग नियंत्रित करते हैं। And when the mode of ignorance is prominent, the yakshas and rakshasas are in control. और तमोगुण की प्रधानता होने पर राक्षस यक्ष उस स्थिति को नियंत्रित करते हैं। Yeah. So, and because Krishna puts the three modes into place, and according to people's activities, they get a particular result. So, if they're engaged in activities in these different modes, they propagate that mode, and that mode becomes strong. तो भगवान तीनों गुणों को क्रियाशील करते हैं और व्यक्ति के कार्यों के परिणाम प्राप्त होते हैं। तो जिस तरह वो कार्य करता है उसी गुण की प्रधानता हो जाती है और वैसे परिणाम उसको प्राप्त। So, right now, the mode of goodness is losing its ground. Western countries, there's no mode of goodness. It's gone, finished. तो वर्तमान समय में सतोगुण जो है अपनी शक्ति अपना बल खोता चला जा रहा है। विदेशी देशों की बात करें तो वहां तो सतोगुण करके कुछ है ही नहीं। In the Krishna conscious societies and of course in some places in India there's still a mode of goodness. But in Western countries it's finished. The mode of goodness is gone, right? He knows. That's why he came here. तो भारत में हम देखते हैं कुछ कुछ शहरों में या इस्कॉन में सतोगुण की जो प्रधानता है, लेकिन विदेशों में तो है ही नहीं। इसे उदाहरण दे रहे हैं रसराज कृष्ण प्रभु का, क्यों जानते हैं विदेशों में सतोगुण नहीं है इसलिए वो यहाँ आ गए। So whatever mode is prominent, the Lord supports that mode. तो जिस गुण की प्रधानता होती है भगवान उसी गुण को ही सहयोग प्रदान करते हैं through the agency of the material energy. भौतिक शक्ति के माध्यम से। So now you have the mode of passion is very strong. And therefore the demons have some power. अभी रजोगुण जो है उसकी प्रधानता चल रही है, इसलिए असुर लोग जो हैं वो शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। I can tell you more, but then they'll take my class off YouTube. If I tell you more, they'll take this class and take it away from YouTube, Instagram, Facebook, and everything else. तो और भी मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ आप लोगों को, फिर लेकिन क्लास जो है फिर YouTube, Instagram, Facebook सब जगह पे, because there's certain things you can't say because the demons will shut you down. क्योंकि कुछ बातें आप बता नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि असुर जो है उनका विरोध करते हैं। I've been shut down already, don't worry. Because if you know what's going on in the world today, you'd be shocked. It's really bad. It's hell. So the demons, yakshas, rakshas, mode of goodness, mode of passion and ignorance are very strong in the world. And people, good people are being destroyed by this. Therefore we have to preach more and more. Preaching is the only hope to bring people to wake up from this demoniac society. तो वर्तमान व्यवस्था में क्योंकि रजोगुण तमोगुण की प्रधानता है तो इसलिए असुर लोग का ज्यादा प्रभाव है और इसके कारण अच्छे लोगों को कष्ट भोगना पड़ता है। तो इसका उपाय यही है कि अधिक से अधिक हम प्रचार करें और लोगों को आसुरी मानसिकता से जगाएं और कृष्ण भक्ति के स्तर पर लेकर आए। प्रचार की इसलिए बहुत आवश्यकता है। Preaching for bringing people in, farm communities for giving them a lifestyle. प्रचार का उद्देश्य है लोगों को लेकर आना और कृषि समुदायों का उद्देश्य है उन्हें एक जीवन का एक सही तरीका सिखाना। Second question. Was that all right? First question? Yeah. Hare Krishna, Maharaj. Thank you very much for this answer. And another question is sometimes, Maharaj, it's seems to me it's very difficult to identify someone's mode, especially in the beginning. So, sometimes it is said that one can be trained to a Brahmana. So, what is the borderline where we can understand? Prabhupada writes in the first canto that it's the
one of the duties of the spiritual master is to observe his disciples and see how best they can be engaged. श्रील प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में बताते हैं कि आध्यात्मिक गुरु कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है कि अपने शिष्य को जांचना और ये समझना कि उसे अच्छे से अच्छे कैसे सेवा में लगाया जा सकता है. So the gurus, along with the temple leaders, should work together to engage people properly. गुरु हैं और ये मंदिर की व्यवस्था संभाल रहे हैं, उन्हें साथ में काम करना होता है ये समझने के लिए कि कैसे किसी भक्त को सेवा में लगाना है. So yeah, it's up to the leaders to establish these programs for evaluation. तो ये जो व्यवस्था संभाल रहे हैं उनका कर्तव्य है कि पहले उसको जांचें और उसको फिर सेवा में नियुक्त करें. Is that okay? I'm not sure I answered your question. It takes leadership to evaluate others. Usually the guru that's his service, to make sure his disciples are being engaged properly. And he can talk to the temple presidents who are engaging his disciples, and they work out a program that is best for all of the devotees. तो ये गुरु का कर्तव्य होता है कि वो उसको पहले जांचे और उसके अनुसार फिर मंदिर के जो व्यवस्था देख रहे हैं उनसे बात करे कि कैसे इस भक्त को अच्छे से अच्छे सेवा में नियुक्त किया जा सकता है. So we have some ways to go. तो अभी हमारे पास जाने के लिए रास्ता है. Bhakti Maharaj had that vision, and he was doing it, especially with this program with the land. That was the next step in the development. तो श्रील भक्ति चरण स्वामी महाराज का इस तरह से उद्देश्य था और वो डिलैंड में से कर भी रहे थे. And other devotees are doing it also, और बाकी भक्त भी ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, but not enough. लेकिन पर्याप्त नहीं. Otherwise, the grihastas, they live on the farms because they need a permanent place to live where they can raise their children and have a place where they can perform activities and get whatever they need to live. Farm communities for the grihastas, brahmacharis stay in the city and they can preach, and the sannyasis keep traveling. श्रील प्रभुपाद जी बताया कि गृहस्थों को जो है विशेष रूप से कृषि समुदायों में निवास करना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक स्थायी निवास चाहिए बच्चों को पालने के लिए और वहां से कुछ जीविकोपार्जन करने के लिए भी. ब्रह्मचारियों को शहरों में रहकर प्रचार करना चाहिए और सन्यासियों को भ्रमण करते रहना चाहिए. Brahmacharis would maintain the temples in the cities and then preach to people who come and then educate them and then send them to the farms. ब्रह्मचारी जो हैं लोगों को मंदिर को संभालें और भक्त जो लोग जुड़ते हैं उनको प्रचार करें और जब वो भक्त बन जाए तो उनको फिर कृषि समुदाय में भेज दें वहां पे संभालने के लिए. So don't worry, brahmacharis, you're okay. तो ब्रह्मचारी लोग चिंता न करें, आप सही जगह पे. We're worried about the grihastas. गृहस्थों के लिए चिंता का विषय है. They have more problems. समस्याएं गृहस्थ ज्यादा हो जाती हैं. Brahmacharis don't have any problems. ब्रह्मचारियों को तो समस्या ज्यादा नहीं है. Right? Correct? सही. Okay? Brahmachari means happy. ब्रह्मचारी मतलब प्रसन्न. Grihastha means, I hope I can become happy. गृहस्थ मतलब कि मैं आशा करता हूं कि मैं प्रसन्न हो जाऊंगा. And sannyasis, we're not sure. और सन्यासी की बात करें तो निश्चित रूप से कह नहीं सकते. I won't talk about that too much. सन्यास की उसके बारे में ज्यादा बात अब मैं नहीं करूंगा, ऐसा महाराज बता रहे हैं. Sannyasis, what do they need? Some time to read Prabhupada's books, that's all. That's the main thing. I talked to one sannyasi, he was preaching all the time.
He said, and I said, we were talking about reading Prabhupada's books. He said, that's sense gratification. That means you're doing something for yourself. Therefore, it's sense gratification. एक सन्यासी से महाराज बात कर रहे थे, प्रचार की चर्चा चल रही थी, तो प्रभुपाद पुस्तकों का अध्ययन की बात आई, तो सन्यासी इस तरह बताते हैं कि ये भी इंद्रिय तृप्ति है हमारे लिए क्योंकि जिस तरह मतलब हम खुद के लिए इसको पढ़ रहे हैं, एक चर्चा चल रही है. You're being selfish if you read. Okay, well, these are just side things. These are the ISKCON side programs. But ये सब आपस की चर्चा है. anyway, this Vanashram, I just finished a book which is based on this whole subject. And the book is not out yet. It should be ready in maybe a week or so. But it's based on the importance of Prabhupada's statements about farm communities. He spoke so much about this. तो मैंने एक पुस्तक लिखी है वर्णाश्रम व्यवस्था के ऊपर ही. अभी तक ये बाहर नहीं आई है, प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा है कृषि समुदायों के ऊपर जोर देके उसका वर्णन किया गया है. Cow protection, cow care, agriculture, farm communities, simple living. गौ रक्षा है, गौ माता की देखभाल करना है, कृषि है, कृषि समुदाय का विकास करना है, सरलता से जीवन कैसे जीना है, ये सब चर्चा है. Your city is quite nice, but I go to Bombay and even worse, Delhi. आपका शहर बहुत अच्छा है, रीबोल. जैसे बॉम्बे गया था बहुत शोर, और दिल्ली तो उससे भी खराब. I was in Delhi one time, and I was staying at one grihasta's home, and they have a young daughter who goes to school. So she was home during the week, and I said, "You're not going to school today?" तो मैं दिल्ली गया था, एक गृहस्थ के घर में रुका था, तो उनकी एक छोटी बेटी भी है, स्कूल जाती है. तो एक दिन वो घर पे ही थी, तो मैंने कहा आज स्कूल नहीं जा रही हो? And she said, "Well, they closed the schools because the air pollution is so bad." तो उन्होंने कहा स्कूल उन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि वायु प्रदूषण बहुत बढ़ गया है. School was closed for 3 days because of the air pollution. 3 दिन तक स्कूल बंद रहेगा वायु प्रदूषण के चलते. They do that every once in a while. People can't even go outside; their eyes burn. तो ऐसा समय समय पे ऐसे स्कूल बंद होते रहते हैं क्योंकि बाहर जाएंगे तो आपकी आंखों में जलन होने लगेगी. So they have what is called air pollution index. You've heard of that? They measure the degree of air pollution. तो उनका एक ऐसा यंत्र बना है वायु प्रदूषण को मापने के लिए. On another occasion, I was in Bombay. एक और बात है, जब मैं बॉम्बे में था, So I asked one person who knows, I said, "What is the normal number for air pollution safety, you know?" मैंने उससे पूछा कि वायु प्रदूषण सुरक्षा का यहाँ पे क्या मापक है. Because they give you numbers. The higher the numbers, the higher the air pollution. क्योंकि वो अलग अलग नंबर देते हैं, जितना ऊंचा नंबर है उतना ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है. So he said, normal is 20. उन्होंने कहा साधारणतः 20 तो है ही. And so I said, well, what number is considered to be dangerous? He said 100, because the 100 and it's dangerous. तो हमने पूछा खतरनाक स्थिति कौन से नंबर पे आती है? बोले 100 पे आती है क्योंकि 100 को खतरनाक माना जाता है. So I asked him, what is the present number right now? तो बोले अभी क्या चल रहा है आपके शहर का नंबर? He said 523. उन्होंने कहा अभी चल रहा है हमारे मुंबई का 523. And I was looking, the sun is there, but it's not so clear. It's got all these clouds in front of it. They said, no, that's not clouds, that's air pollution. तो मैं सूर्य की ओर देख रहा था, मैंने कहा सूर्य तो है लेकिन बादल हैं, दिख नहीं रहा है. बोले बादल नहीं है, ये वायु प्रदूषण का प्रभाव है. So, welcome to modern India. स्वागत है आधुनिक भारत में. They're chasing after the West, but it's becoming really bad in the cities. विदेशी सभ्यता का पीछा करता हुआ भारत, लेकिन शहरों में तो हालत बहुत ही खराब है. Get these farms. Cities are going to be impossible to live. After some time, you'll see it. Everything is going to collapse. It's collapsing in the West already. It's falling apart there.
तो ज़्यादा समय तक स्थिति ये चलने नहीं वाली है, धीरे धीरे ये सब अव्यवस्था को बढ़ाने वाली है। विदेशों में पहले ही स्थितियां गड़बड़ाने लग गई हैं। Prabhupada said, 1973, he said, in 50 years, the whole Western civilization will collapse. 1973. So what year is that? 2020। तो 1973 में प्रभुपाद जी ने कहा था 50 सालों में सारी विदेशी जो सभ्यता है वो तहस नहस हो जाएगी। तो अभी कौन सा चल रहा है? 2023। You don't have to go to the West. All you have to do is hear the news. It's collapsing. It's really crisis everywhere now. This crisis is everywhere. तो आप लोगों को विदेश में जाने की आवश्यकता नहीं है। विदेश में सभी जगह इस समय संकट की स्थिति व्याप्त है। संकट। I can give you many statistics, but I don't want to bore you. बहुत सारे आंकड़े मैं आपको इसके दे सकता हूँ अलग अलग परिस्थितियों के। Prabhupada said, get these farms. इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कृषि समुदायों का विकास He said कीजिए। the future of our movement and the future of the world. People, even people in the secular society are getting farms now because they know the cities are finished. You know. ये हमारा भविष्य है, हमारे आंदोलन का और विश्व का भी भविष्य है। कई लोग इसलिए उस ओर मुड़ रहे हैं अभी शहरों में जो रहते हैं। Air pollution, crime, drugs, violence, everywhere in the cities. You can't walk down the street at night in any big city in Western countries. You'll get robbed, you'll get killed. If you're a woman, you'll get raped. It's like that. At night, in the big cities in the Western countries, nobody goes out late, walking alone. Very, right? You know, from London, right? Yeah. London is a prime example. तो वायु प्रदूषण के साथ साथ कई तरह की आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ी हुई हैं, जिसके कारण आप देखेंगे बड़े शहरों में या विदेशों में तो कोई रात को बाहर ही नहीं निकलते हैं, क्योंकि हिंसा बलात्कार ऐसी घटनाएं आम है वहां पे। We have to show people how to live, and that's these farms. हमें लोगों को सिखाना है कैसे इन कृषि समुदायों में वे अच्छे से रह सकते हैं। And you can have modern things on the farm. It's not that you have to give away all the modern things, but you have to have an environment that is free from all of the control of the Western, subculture, which is just sapping the life of everyone. तो आप लोगों को सभी आधुनिक सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं कृषि समुदाय में भी, लेकिन लोगों को वैसे मुख्य रूप से ये सिखाना है कि कैसे ऐसी व्यवस्था में आप अच्छे से रह सकते हैं जहाँ भी विदेशी संस्कृति के कुप्रभाव से आप बच सकते हैं। Cows instead of cars. कार की जगह गाय। Bulls instead of cars. हाँ? बैलों का उपयोग किया जाए वाहनों की जगह पे। Are you thinking, oh boy, back to the bullocks? तो आप सोच सकते हैं कि फिर से बैलगाड़ी की तरफ ही हम जाएंगे। You still can have your cars, but bulls have to be there. तो आप कार रखिए, लेकिन साथ में बैलगाड़ी का भी उपयोग होना चाहिए। I'm practicing for my next birth. In a Krishna conscious farm only. Okay, thank you. Dandiwat? How do you say thank you? धन्यवाद। Dhanyawad. Hey, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai.